Hi friends, welcome to this third session of Technology for All in English and Hindi, a bi-weekly video on our YouTube channel EcoThrust and also available in our website www.futureliving.com. Without further ado, we will start the narration of our first chapter of the book, which is the Internet of Things, All Things Interactive. We start with explaining for whom the book was written. The book was written for the technology user. Who is this technology user? The technology user could be anyone amongst the 5 billion internet users of the world in January 2023. And these technology users, amongst them, the most active are the young adults, the millennial, and those who take an interest in buying technology products, knowing about them, the gadget freaks. You could be a dancer, a singer, you could be a poet or a writer, a business person or a carpenter, but you could still use technology frequently and want to know about them. So this book has been written for them. It's not written for experts. It is not written for software developers. It is written only for those who want to understand technology. Simple. Now, before we go into the depths of IoT, which is Internet of Things, let us see how the Internet arrived in the first place. How did we come to this point where we have something called the Internet of Things? So the Internet, arrived sometime in the mid-80s, but it was in the mid-70s that the US government, after the Vietnam War, wanted computers to talk to each other, communicate. So these computers had to communicate because they wanted to pass on their data analytics, which was conducted in Washington or maybe California or New York, to those sites where the US Army was fighting wars like Vietnam and Korea, etc. So there was no method of data transfer. So they wanted that whatever analytics, whatever analysis of the war situation and whatever communication instructions they gave from their headquarters should go easily and reach the places where the American army was fighting the wars. Fair enough. So what it asked these computer scientists at Menlo Park to do is transfer the data from one place to another through radio waves. Apparently it was not difficult because radio waves usage was going on from the First World War. So the scientists at Menlo Park wrote down the code and transferred the data in small data packets through radio frequency. And there was no problem. They downloaded the data at Menlo Park, but when they started using and sharing that data amongst computers, they found that there were lots of problems. It took them not 1 year, not 2 years, but 10 years to solve those problems, and what emerged thereafter was the LAN, or the method which we today use for networking. It took 10 whole years for the linear network to be developed, and only in 1986
we find that the NSF, or the National Science Foundation, was able to first structure the backbone of the internet through a method called the NSF net. And that NSF net connected to all the supercomputers in the educational institutions, and there were about 2,000 of them, and they started interacting with each other using the local area network or LAN. So that was a lot of time which was taken, but ultimately, using a speed of 56 kbps circuits, they were able to communicate. Those 2,000 supercomputers were able to communicate with one another. And 5 years later, they extended the service to about 2 million computers within the United States, and they were all connected free of cost through the local area network. But the network had to be upgraded to 45 megabits per second. At that time, there was a similar exercise in Europe, and Tim Berners-Lee and the team at CERN was doing a similar exercise with personal computers in Europe. And they were the first people who set up the ETSI, or the institute which provided the standards of internet communication. The first generation computers, the first generation mobile network, 1G, was then introduced, and it was all about transmitting voice through analog signals. Remember, those days there were no digital signals. The voice was transmitted through analog signals, which was basically the sine wave communication. And we were used to landlines then. We used to connect through a 5-pound fixed line phone, and the trunk calls had to be made through exchanges, telephone exchanges. You must be remembering that how difficult it was to get through. Sometimes you had to wait for the whole day to communicate. And even while seeing a cinema, the data was transferred into tapes, and those tapes were huge reels which, after each cinema show, the runners would take it either on cycle or on cars, or even running with the tapes to the next theater, so that other people could see the same film. There was no transfer through internet. So those were real difficult days. And at that time, when the first mobile came in through a handheld wireless service with an extractable antenna, it was indeed a novelty. Now, we will also tell you over here that registrations to this video program is not compulsory, but if you do your registrations and subscriptions, you will get 3 things. One is the transcript, and one is the question and answers, and one is the quiz. And that will help you understand that whether you are understanding and retaining what is taught in the classes. So we have a regular program and a premium program. You can attend any of them, and this program, which started on Sunday 12th November 2023, will try to help you to
learn about technology without going to a tech school. And it talks about 10 technologies which we explained in our last class. And the first technology of this is IoT, about which we will know more later. Now for our friends in Hindi. नमस्कार, आप सबको टेक्नोलॉजी फॉर ऑल इन हिंदी एंड इंग्लिश के तीसरे सेशन के में स्वागत है। ये इकोथ्रस्ट का यूट्यूब चैनल में 15 मिनट का वीडियो है जो आप लोग हफ्ते में 2 बार टेक्नोलॉजी के बारे में सुन सकते हैं और वो आपको सब चीज़ों के बारे में अवगत कराएंगे। हमारे पहले सेशन 12 नवंबर 2023 को दिवाली को शुरू हुआ था और उसके बाद ये सेशन तीसरा है और ये हमारे किताब इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर फ्यूचर लिविंग जो राउटलेज द्वारा सितंबर 2023 में प्रकाशित हुआ था, राउटलेज यूके द्वारा, उसके ऊपर आधारित है। ये सरल तरीके से समझाता है और आप हर हफ्ते ये वीडियो सुन के ही समझ सकते हैं क्या टेक्नोलॉजी, ये 10 टेक्नोलॉजी क्या है जो कि आपकी दुनिया बदलने वाली है। इंटरनेट के बारे में तो आप सुना ही होगा, जिसके माध्यम से आप दोस्तों के साथ वार्तालाप करते हैं और जिसके साथ आप ईमेल भेजते हैं, वही इंटरनेट है। ये पुस्तक आपको टेक्नोलॉजी के उस दुनिया में ले जाएगा जो कि आपको शुरू से बताएगा कि इंटरनेट, चीज़ों का इंटरनेट और इंटरनेट ये कैसे आया। तो सबसे पहले हम सुनते हैं कि इंटरनेट कैसे आया। तो इंटरनेट जब जरूरत पड़ी यूएस के डिफेंस फोर्सेस को, क्या वो कोरिया में युद्ध लड़ रहे थे, वियतनाम में युद्ध लड़ रहे थे, तो उस समय 75 के आसपास उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि कंप्यूटर एक दूसरे से बात करें और कम्युनिकेशन शेयर करें, जो कि हमारा जो कैलिफोर्निया या वाशिंगटन में जो डिसीशंस हम लेते हैं और कंप्यूटर के ज़रिए हम उसको ट्रांसफ़र कर सके अपने जहाँ पे वॉर जोन से वहाँ। तो उसके लिए उन्होंने कुछ साइंटिस्ट को बोला कि आप ये काम कीजिए। साइंटिस्ट ने उठा के अपना कोड लिखा, डेटा पैकेट्स में डाल दिए और उसको रेडियो सिग्नल से ट्रांसफ़र कर दिया। रेडियो सिग्नल्स तो आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के पहले से इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। रेडियो सिग्नल से वो मेनलो पार्क पहुंच गया और मेनलो पार्क में डाउनलोड होने के बाद उन्होंने सोचा कि ये डेटा हम यूज़ कर लेंगे, पर वो डेटा यूज़ करने के लिए उन्हें 10 साल लग गए। एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर शेयर होने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी और उसके लिए उन्हें लोकल एरिया नेटवर्क डेवलप करना पड़ा, जिसको हम आज लैन कहते हैं। तो डाउनलोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर डेटा शेयरिंग में बड़ा प्रॉब्लम था। तो आप उसके बाद क्या हुआ, क्या वियतनाम युद्ध के बाद 75 में इन्होंने काम शुरू किया था और 86 में जाके प्रथम इंटरनेट का स्थापना हुआ, जो कि नेशनल साइंस फाउंडेशन ने किया और उसने 1986 में 56 kbps का सर्किट तैयार किया, जिसके साथ 2000 विश्वविद्यालय को उसने जोड़ दिया जहां पे सुपर कंप्यूटर्स लगे थे और वो एक दूसरे के साथ वार्तालाप करने लगे और लैन या लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करने लगे और 5 साल के अंदर ये 20 लाख सुपर कंप्यूटर और कंप्यूटर्स पे शेयर होने लग गया डेटा, जबकि पूरा अमेरिका भर
में जिसके पास भी कंप्यूटर था वो फ्री में ये काम करने लगा। तो ये हुआ शुरुआत अमेरिका में। इसी तरह से यूरोप में टिम बर्नर्स ली और सर्न के साइंटिस्ट लोग अपना प्रयोग शुरू किए और उन्होंने वहाँ पे सारे पर्सनल कंप्यूटर्स को जोड़ दिया। और सिर्फ वो नहीं, उन्होंने एक डेटाबेस के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया। वो स्टैंडर्ड जो कि ETSI जो इंस्टीट्यूट था उसने बनाया था, और वो फर्स्ट जनरेशन टेलीकॉम नेटवर्क के लिए 1G का स्टैंडर्ड लिखा, जो कि फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क था। और उससे क्या हुआ, उससे इन्होंने सबसे पहला कम्युनिकेशन शुरू किया, जबकि साइन वेव्स के थ्रू डेटा को एक दूसरे से ट्रांसफर कर सके और वो फोन में आदमी सुन सके। तो पहले फोन्स तो बहुत बड़े होते थे, तो पर वो जमाना वो था जबकि हम फिक्स लाइंस फोन्स छोड़ के हम सबसे पहले मोबाइल फोन्स पे जा सके, जिसका लंबे लंबे एंटेना रहते थे और उसको खींच के हमें चालू करना पड़ता था। पर यह है क्या, कम से कम हमें ट्रंक कॉल लगाने के लिए एक्सचेंज के थ्रू नहीं जाना पड़ता था। फिल्म देखने के लिए हमें रील लेके एक सिनेमा हॉल से दूसरे सिनेमा नहीं जाना पड़ता था। और ये धीरे धीरे करके ये बदलाव आया और 1G नेटवर्क का शुरू हो गया। और 1G नेटवर्क पहला कम्युनिकेशन सिस्टम था जो कि इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करने लगा। अब ये जो लेख है ये हम अगले हफ्ते फिर आपको बताएंगे कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद इंटरनेट के बाद इंटरनेट चीजों का उसमें क्या अंतर है और वो कैसे आया और वो आज के दिन में क्या कर रहा है, आपके रसोई घर में क्या कर रहा है, आपके बाथरूम में क्या कर रहा है, आपके बेडरूम में क्या कर रहा है, आपके गाड़ियों में क्या कर रहा है, क्या बदलाव ला रहा है चीज़ों का इंटरनेट। ये हम अगले हफ्ते बताएंगे। और आप हमारे पिछले रिकॉर्डिंग्स देखिए, और अगर आप चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन और सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, जो कि आप क्वेश्चन आंसर्स और क्विज से आपको पता चल जाएगा आप कितना सीख रहे हैं। नहीं तो आप ऐसे भी अटेंड कर सकते हैं, तो उसमें आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं, रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं, और आप कुछ न कुछ सीखते ही रहेंगे। ये हमारा वादा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू।